Hello. So hi, I am back. आज के दिन लेट मी सी कि मैं क्या-क्या बोल सकता हूँ आज। आज मैंने आई मीन कुछ ख़ास पढ़ाई नहीं करी। आई पिक्ड अप I didn't really solve any questions yet code forces पे, but I picked up I was trying to solve it. I applied to jobs. I applied to jobs today and एक सेकंड let me just adjust this thing. हाँ, ठीक है। ओके। आई अप्लाइड आई अप्लाइड बहुत सारी जगह आज और मैं जिम गया और मैं उठा ही दोपहर को था तो आई डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम एनीवेज आज बट टाइम इज़ नॉट नेवर द इशू टाइम इज़ नॉट द इशू इवन इवन जितना टाइम था मेरे पास आई फील लाइक आई कुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव लेट्स टॉक अबाउट जो चीज़ें मैंने नहीं करी आज मैंने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं उठाया आई मीन हाँ मैंने आई वुडंट से आई हैव डन इट आई वुडंट से आई हैव मेड significant progress on the प्रोजेक्ट बाकी है सीपी नहीं करी मैंने आज और प्रोटीन इंटेक नहीं लिया मैंने अभी तक आज का या जितना मुझे ले लेना चाहिए था अभी तक तो प्रोटीन इंटेक आई थिंक okay if I calculated it's probably like around 20 grams 15 ग्राम इज फ्रॉम प्रोटीन बार जो कि मैं और नहीं खरीदने वाला हूँ सो इट वाज फैब PHAB फैब का एक प्रोटीन बार है जो मुझे शॉप में नया दिखा दे डोंट हैव वो वाला प्रोटीन बार जो मुझे चाहिए होता है इट्स राइट बाइट का और ओके आई स्टिल डोंट नो राइट बाइट इज द कंपनी और मैक्स प्रोटीन इज द कंपनी बट राइट बाइट का एक प्रोटीन बार है विच इज़ पर्पल इन कलर और वो मेरा सबसे फेवरेट है और एक्चुअली इनफैक्ट वही मुझे पसंद है मुझे बाकी सारे पसंद नहीं है they don't have that in stock anymore but बाकी सारे पड़े हुए हैं अभी भी तो I don't think they're gonna restock it I think they're gonna एक साथ restock करेंगे जब सारे खत्म हो जाएंगे तो और एक तो वो था फैब का था and it was a new one I hadn't seen it so I thought कि ट्राई करते हैं उसको और 115 रुपये का था वो और इतना इतना सा था and something unique about that was कि उसमें हवा भरी हुई थी ओ बाय द वे मैं जिम से आया हूँ अभी तो मैं आई एम नॉट गोइंग फॉर अ शावर इट बिकॉज़ बाथरूम इज ऑक्यूपाइड राइट नाउ सो आई थॉट कि एक वीडियो बना देता हूँ छोटा सा इन केस मैं बाथरूम से निकले जब एक सेकंड सो हाँ वो प्रोटीन बार हेजल नट लिखा था उस पर एंड इट लुक्ड टेस्टी और उसमें इमेज वाज मिसलीडिंग सो आई थॉट कि let's try this new protein bar I might like it might be tasty इट वाज वेरी एक्सपेंसिव पता है क्या हुआ सो मैं शॉपकीपर के पास गया मैंने वो प्रोटीन बार दिया ठीक है और उसको उसको भी नहीं पता था कि इतना इतना महंगा इतना एक छोटा सा प्रोटीन बार इतना महंगा होता है तो उसने लिया प्रोटीन बार और उसने स्कैन किया और बस वही था मेरे पास और उसने कहा कि 115 देन देन उसने बोला एक सेकंड रुकना ही थॉट कि उसने गलत स्कैन कर लिया ही थॉट कि 115 कैसे हो सकता है फिर उसने फिर से स्कैन किया 115 ही था फिर लाइक इतनी छोटी सी चीज का 115 एंड देन ही वाज लाइक स्माइलिंग एट मी बट आई मीन ठीक है मैं उसको और कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं था नॉट बिकॉज वो एक्सपेंसिव था उसका टेस्ट अच्छा नहीं था सो देयर इज दैट एंड मैंने ब्रेड खाया कुछ आई थिंक 3-4 ब्रेड खाए आई एम गेसिंग मे बी 5 ग्राम प्रोटीन हो एटलीस्ट ब्रेड शायद प्रीटी श्योर 4 से ज़्यादा ही खाया हाँ तो जैसा कि मैं कह रहा था हाँ तो सो फार आई थिंक 20 ग्राम प्रोटीन इंटेक हो चुका है मेरा और आइडियली आई बिलीव एटलीस्ट 70 ग्राम होना चाहिए मेरा बिकॉज मेरा बॉडी वेट 70 केजी से एक्चुअली 70 केजी से थोड़ा ज़्यादा है लेट्स एम फॉर 80 केजी बिकॉज 10 ग्राम ही ज़्यादा है सो मेरा पाउडर खत्म हो गया प्रोटीन पाउडर खत्म हो गया सो आई हैव टू ऑर्डर दैट्स 30 ग्राम आजकल से
So it's 50 ग्राम, 30 ग्राम मुझे और जुगाड़ करना है। लेट्स से मैंने दूध पीता हूँ, दैट्स 15 और जुगाड़ करना है। मैं डिनर में जो भी ऑर्डर करूँगा, आई एम गोना मेक श्योर कि उसमें 15 ग्राम से ज़्यादा है। स्पीकिंग ऑफ डिनर, देयर इज़ अ प्लेस पास में जहाँ से लाइक घर का खाना मैं घर टाइप इट्स अ किचन, और वहाँ से घर का खाना मैं घर टाइप का खाना मंगा सकता हूँ। यूजुअली मैं कभी-कभी मैं रोटी ले लेता हूँ सिर्फ़, या कभी-कभी मैं थाली ऑर्डर कर लेता हूँ पूरा, तो इट्स नॉट जंक फूड इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बट जब मैं जिम से बाहर निकला, इट वाज़ क्लोज्ड, व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज़ एक दिन मैं बहुत रात को गया था, आई थिंक 11 के बाद गया था, एंड इट वाज़ स्टिल ओपन, सो आई थॉट इट मस्ट बी ओपन। संडे को नहीं खुलती है वो, ये मैं देख चुका हूँ, तो कल नहीं खुलेगी, वीकडेज़ पे ही खुलती है। सो या मेबी संडे को जल्दी बंद हो जाती है, मैं कभी नॉर्मल टाइम पे जाके नहीं देखा हूँ, बट एनीवेज़, या मे बी मैं गया था, मैं देखूँगा कल, मोस्ट प्रोबेबली संडे को खुली नहीं रहती है। सो दैट्स नॉट एन ऑप्शन। मैं ईट क्लब से ऑर्डर कर सकता हूँ, बट आई थॉट ईट क्लब से मैं रोटी ऑर्डर करूँगा, बट रोटी इज़ सोल्ड आउट बिकॉज़ ऑफ कोर्स हेल्दी चीज़ जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है। पराठे हैं, मैं पराठे ऑर्डर कर सकता हूँ, या आई एम थिंकिंग कि इट्स ईदर पराठे के साथ कुछ, बट मैं थोड़ा-सा पक चुका हूँ पराठे खा-खा के, एंड उसके साथ सब्ज़ी भी ऑर्डर करनी पड़ेगी, सो इट्स ईदर दैट, और मैं चावल के साथ कोई डिश लाइक राइस बोल ऑर्डर कर सकता हूँ, या फिर मैं सबवे ऑर्डर कर सकता हूँ। सो आई विल डिसाइड ऑन दैट। मोस्ट प्रोबेबली आई एम थिंकिंग सबवे ऑर्डर करूँगा बिकॉज़ इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। हाँ, हाँ। सो देयर इज़ दैट, और दैट्स अबाउट प्रोटीन, और आफ्टर दैट मेरा हो जाएगा प्रोटीन इंटेक पूरा। बट हाँ, मुझे चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी, मैं नहा के आऊँगा फिर मैं ऑर्डर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने क्या-क्या किया जिम में आज। लेट मी टेल यू माय प्रोग्रेस, डेली प्रोग्रेस। मैंने ऑब्सिडियन डाउनलोड कर लिया है। पहले मैं कीप नोट्स में लॉग कर रहा था, बट आई डोंट थिंक कीप नोट्स में फ़ोल्डर की फंक्शनैलिटी है, या है भी तो मुझे पता नहीं कैसे एक्सेस करते हैं। सो मैंने एक ऐप है ऑब्सिडियन करके, इट्स आल्सो नोट कीपिंग ऐप। तो उसमें फ़ोल्डर बना के उसके अंदर नोट्स लिख सकता हूँ। सो आई हैव जस्ट स्टार्टेड नोट कीपिंग। कल का मैंने कर लिया है नोट, आज बट कल क्या, आई डोंट थिंक वीडियो बनाई थी कल नोट करने की, क्योंकि कल मैंने जिम जाने से पहले वीडियो बनाई थी, जिम से आने के बाद नहीं बनाई। सो आज का मैं बता देता हूँ। जिम अगस्त 15, वार्म अप। ठीक है, सो सबसे पहले मैंने वार्म अप किया। आज मैं सोच के गया था कि लेग्स लोअर बॉडी मारूँगा। सो वो बट वार्म अप तो हर दिन करना होता है। तो वार्म अप में मैंने किया पुल-अप्स, वाइड, एक पर्टिकुलर बार, आई थिंक आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। उसमें वाइड पुल-अप्स किए मैंने, 5 रेप्स किए। फिर थोड़ा लाइक कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेके 5-5, सो 5-5-5 करके किए। डिप्स मैंने 10 किए, फिर ब्रेक लेके फिर 10 किए। बैक एक्सटेंशन होती है एक, उसको 20 किया मैंने। ये फुल बॉडी वार्म अप कर रहा था मैं। फिर लोअर बॉडी के लिए एक स्पेसिफिक लाइक लोअर बॉडी के लिए एक मैट बिछा के मैंने थोड़ा-सा वार्म अप किया। और यू नो क्या हुआ था? सो मैं एक लाइक जगह है जिम में जहाँ पे लाइक मैट बिछा के लोग वार्म अप करते हैं। तो मैंने मैट बिछाई, मैंने थोड़ा-सा वार्म अप किया, ठीक है? लाइक आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड, लाइक हिप थ्रस्ट, बट लाइक लेटे हुए हिप, हाँ, ग्लूट ब्रिजेस। सो लाइक दोनों पैर से ग्लूट ब्रिज, फिर लाइक सिंगल पैर रख के ग्लूट ब्रिज। फिर आई डोंट नो लाइक उसको क्या बोलते हैं, लाइक तुम ऐसे लेटे हो एंड देन यू टेक वन लेग अप, फिर डाउन, अप, डाउन, जो भी इसको बोलते हैं। ये वाला किया मैंने, और थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग वेचिंग किया। फिर मैं क्या किया ना, मैं जाके मैं लाइक आई वेंट टू लाइक ड्रिंक वाटर, क्योंकि पानी की बोतल कहीं और थी। फिर मैं जब आया तो कोई और लेट गया था वहाँ पे, और ही वाज़ लाइक डूइंग हिज स्ट्रेचिंग्स, तो मुझे मन एवर से आई डिडंट वांट टू बॉदर हिम। मुझे मन नहीं किया उसको बॉदर करने का, या फिर बगल में जाके फिर से वार्म अप करने का। सो आई जस्ट स्टार्टेड टू मूव ऑन विद द प्रॉपर एक्सरसाइजेज़। सो लेग एक्सटेंशन की मशीन पे गया मैं, लेग एक्सटेंशन के हो गए 70 केजी से मैंने ट्राई करा, 10 रैप, फिर 70 केजी से 15 रैप। फिर हैमस्ट्रिंग, सो 2-2 सेट करके कर रहा था मैं, बिकॉज़ आज मुझे मन नहीं कर रहा था जिम करने का, बिकॉज़ बहुत चीज़ें चल रही थी मेरे दिमाग में, मोस्टली जॉब रिलेटेड, एक्चुअली जॉब रिलेटेड ही। सो लेग एक्सटेंशन किया मैंने, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल्स किए मैंने उसी मशीन पे। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स के 70 केजी 15 रैप्स, फिर 80 केजी थोड़ा बढ़ा दिया, बिकॉज़ इट वाज़ लाइक ईज़ी। इट फेल्ट ईज़ी बिकॉज़ दैट्स स्मार्ट, तो जो भी। 80 केजी 15 15 रैप्स, फिर लंजेस किए मैंने डंबल से।
पहले 5 की चीज़ से वार्म अप किया, 5-5 हर एक साइड के। सो पहले मैं क्या करता हूँ, लाइक लंजेस लाइक जाने वाले नहीं, एक जगह खड़ा हूँ, लाइक कैसे, लाइक हाँ ये इमेजिन इमेजिन मैं खड़ा हूँ, ठीक है, जो भी ठीक है, मैं खड़ा हूँ, फिर दूसरे पैर से, फिर ये वाले पैर से, सो लाइक दैट, वैसे वाले लंजेस किए मैंने। तो 5 kg, 5-5 ईच साइड के, पहले 5 इस तरफ से किए, फिर 5 इस तरफ से किए, फिर मैंने 10 kg उठाया, फिर 10 kg के 10 दोनों साइड के किए, 5-5 इस तरफ से किया लेफ्ट पैर से, फिर 5 राइट पैर से किए, फिर मैंने एक और मार दिया गलती से। तो छठवा जब हो गया, मैं सोचा कि चलो पूरे 10 ही इससे मार लो, तो फिर 5 लेफ्ट, फिर 10 राइट, फिर 5 लेफ्ट, बट एसेंशियली दैट्स 10 on each side, but could that cause some sort of imbalance? I don't think it was that big of a difference, but खैर जो भी। फिर मैंने अगला वाला सेट किया 10 से दोनों साइड, बट दिस टाइम कायदे से किया, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ। और उसके बाद मैंने क्या श्रग्स किया। सो श्रग्स मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि आज सुबह से, नॉट सुबह से, ओके, मैं टेक्निकली सुबह से, बिकॉज सुबह जब भी मेरी नींद खुल रही तो मुझे कंधों में दर्द कर रहा था। तो जब से मैं उठा हूँ ना, आज मेरे कंधों में बहुत दर्द कर रहा है, एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ अ पेन वेर यू थिंक कि अगर कोई बहुत लाइक दबा दे वहां पे, मसाज कर दे, या कुछ लाइक कोनी मार दे वहां पे, कोनी से मसाज करे, तो इट विल सॉर्ट ऑफ रिलीव द पेन, लाइक प्रेशर लगने से इट विल रिलीव द पेन। सो आई थॉट कि यहाँ पे जब भी, यहाँ पे काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील होता है मुझे, बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज कि मेरा थोड़ा सा पॉस्चर खराब है। तो जब भी डिस्कम्फर्ट होता है ना, बिहाइंड द बैक लैट पुल डाउन और श्रग्स से, आई बिलीव थोड़ा सा ना, दो चीज़ें, आई बिलीव ऑल्सो कि इट विल स्ट्रेंथन माई मसल्स वहाँ पे, सो इट्स बेटर फॉर मी, एंड ताकि उससे पेन चले जाएगा इन द लॉन्ग रन, एंड ऑल्सो थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है मुझे। सो श्रग्स किया मैंने, उससे रिलीफ मिला मुझे थोड़ा सा, नॉट दैट मच, बट होपफुली इट विल स्ट्रेंथन द मसल, एंड बाद में फिर इट्स बेटर फॉर मी इन द लॉन्ग रन, ताकि बाद में मुझे उतना दर्द ना हो। तो 10 kg को उठा के 10 reps किए मैंने, दोनों साइड एक साथ, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा लाइक अलग वेरिएशन करता हूँ श्रग्स का, नॉट जस्ट प्लेन ऐसे ऐसे, बिकॉज मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखी थी एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की, उसने बोला कि दिस इज द ऑप्टिमल वे, तो मैं उस तरह से करता हूँ। इट्स लाइक द ऑप्टिमल वे इज थोड़ा सा आगे करके, ओके इफ आई कैन शो इट, थोड़ा सा आगे होके, एंड देन व्हेन यू पुल बैक यू लाइक स्क्वीज द अपर बैक। सो उस तरह से मैं कर रहा था। तो ठीक है, 10 kg के 10 किए, फिर 12.5 से 10 किए, सॉरी 12.5 से 20 किए, फिर से 12.5 से 20 किया। और मैं पता बहुत कम ब्रेक्स ले रहा था जिम में, एंड दैट्स समथिंग आई डिड यस्टरडे आल्सो, व्हिच इज गुड, बिकॉज आई थिंक मेन रीजन इज कि मैं कम वेट से कर रहा हूँ, बिकॉज माई गोल राइट नाउ इज टू जस्ट स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंट रादर देन लाइक पुश माई सेल्फ ज़्यादा। एंड अनदर थिंग इज कि मैं थोड़ा सा लाइक maybe my personality has changed थोड़ा सा, I want to like, I'm eager to finish my sets, you know, like जैसे ही हुआ I'm like फटाफट करते ताकि I can move on to the next set, या फिर I can move on to the next task which might be घर जाके कुछ और करना, या रूम पहुंच के कुछ और करना। सो दैट वाज ऑल फॉर द जिम आज के लिए। इट इज़ 13 मिनट के, 13 मिनट में काफ़ी रिकैप हो गया। थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, फिर मैं नहा के फिर I'll come and I'll record again, and मैं कोड फोर्सेस करते हुए, नहीं एक्चुअली मैं एट कोडर पे आज कॉन्टेस्ट था, एंड आई वांट टू थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, आई डोंट वांट टू गेट स्टक ऑन कोड फोर्सेस, बिकॉज अगर मैं एट कोडर नहीं दूं, देन द रीजन मैं एट कोडर नहीं देना चाहता हूँ इज बिकॉज आई फील लाइक इट इज नॉट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक कोड फोर्सेस, और मैं अपना पूरा मैं चाहता हूँ मैं कोड फोर्सेस टाइप के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करूँ, ताकि कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट दे के मैं कोड फोर्सेस पे रेटिंग बढ़ा सकूँ, बट आई वांट टू बी मोर लाइक a general good problem solver rather than just a general good coder on code courses. So I think I should be more क्या बोलते हैं उसको, diverse in my abilities. So मैं जाऊँगा कोड आके क्वेश्चंस उठाऊंगा, कॉन्टेस्ट तो दे नहीं सकता। I'm not sure virtual contest के उसमें है कि नहीं सिस्टम, but even if there is, it's like I think it's better for me if I just solve the questions. वर्चुअल कॉन्टेस्ट में बैठे रहना है तो मैं, एंड आई डोंट थिंक इट्स फॉर पीपल हु वो जानना चाहते, जो जानना चाहते हैं अपनी रैंकिंग,
बट आई डोंट थिंक आई रियली वांट टू नो माय रैंकिंग। इट्स आल्सो कि लाइक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर बीच में ब्रेक ले ले कुछ करने का, फिर वापस आके क्वेश्चन सॉल्व कर, दैट्स लाइक सॉर्ट ऑफ माय फ्लो, दैट्स सॉर्ट ऑफ माय हैबिट। मेरा सिस्टम वैसा है, तो इट डजंट मेक सेंस टू गिव वर्चुअल कॉन्टेस्ट्स फॉर मी। पता है, मैं एक चीज कर, लाइक समथिंग हैपेंस जब मैं uh, काम करता हूँ। लॉट ऑफ टाइम्स मैं करता हूँ, लाइक दिस इज माई राइट हैंड और मैं यहाँ पे माउस पकड़ता हूँ और मैं ना ऐसे करता हूँ या ऐसे मैं करता हूँ काफी, तो आई फील लाइक वो फेस में ना थोड़ा सा इम्बैलेंस ला देता है मैंने, लाइक इस तरह से। बट मैं कर भी क्या सकता हूँ, आई कुड डू दिस एंड देन आई कैन यूज दिस टू लाइक मूव द टच पैड। बट हाँ, ये चीज थोड़ी सी गंदी हैबिट है मेरी। आई डोंट थिंक वन शुड डू थिंग्स दैट विल cause asymmetries neither in the body nor in the face. I just don't think it's a good thing. अच्छी अच्छी नहीं लगती asymmetry देखने में। एंड आई डोंट नो, मेन रीजन वही है, अच्छी नहीं लगती देखने में asymmetry। तो वो दैट्स दैट। और एक और चीज पता है, जिम में व्हेन आई एम लाइक डूइंग जिम, आई एम अवे फ्रॉम लाइक एनी सॉर्ट ऑफ, like I'm not interacting with anything, like I don't have a screen in front of me, I'm not talking to anybody, I'm just all by myself. I'm not, I don't want to use the word distracted, but I'm not occupied with anything, just me and my मेरा दिमाग में जो थॉट्स चल रहे होते हैं। और काफी काफी अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं ना, अच्छे अच्छे थॉट्स, पर लाइक थॉट्स दैट आर लाइक मी, थॉट्स दैट रिप्रेजेंट मी और माई ट्रू सेल्फ। और आई जस्ट विश कभी कभी कि आई कुड रिकॉर्ड माई सेल्फ इन दोज मोमेंट्स, बिकॉज दैट वुड बी ऑथेंटिक, लाइक जैसे मेरे मन में थॉट आया आई कैन एक्सप्रेस इट इन अ वीडियो। बट इंस्टेड आई हैव टू वेट एंड यू नो रिमेंबर इट, या फिर कहीं लिख लूँ और फिर आके मैं वीडियो में बोलूँ। मेरा लाइक अगो मैं चाहता हूँ कि एट सम पॉइंट जब मेरा खुद का, लाइक व्हेन आई हैव अ प्लेस ऑफ माय ओन, या मे बी जब हमारे घर में जिम बन जाए, आई कुड लाइक, मेरा बहुत टाइम से लाइक इवन फ्रॉम कॉलेज मेरा ऐसा आई वुडंट से ड्रीम, बट आई वांट दिस टू हैपन कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एंड साथ में मेरे पास कैमरा है, लाइक जैसे सैम सुलेक करता है। सैम सुलेक इज अ यूट्यूबर। सैम सुलेक वैसे ही करता है, लाइक ही जस्ट रिकॉर्ड्स हिमसेल्फ वर्किंग आउट एंड ही जस्ट रिकॉर्ड्स हिमसेल्फ टॉकिंग। तो उस टाइप का मैं थोड़ा करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट वर्किंग आउट एंड आई एम जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट शेयरिंग माय थॉट्स। सो हाँ, ये एक चीज़ है, दैट इज़ वन ऑफ माय ड्रीम्स। हाँ ठीक है, इट्स अ ड्रीम, ठीक है, जो भी व्हाटएवर, इट इज़ अ ड्रीम कि मैं वैसा करना चाहता हूँ। अनदर थिंग दैट कुड लाइक ऐड टू माय एसिमेट्रीज, कभी कभी मैं ऐसे बात करता हूँ लाइक लाइक दिस, या फिर लाइक ऐसे ही इज द नेचुरल, एंड फिर ऐसे मुझे फोर्स करना पड़ता है अपने आप को ताकि बैलेंस मेंटेन हो, बट बोथ आर बैड। आई थिंक जस्ट नॉर्मली बात करना इज गुड। सो हाँ, मैं जस्ट नहा के आता हूँ, फिर ओके नहा के आके मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कोड प्रोसेस करूँ या तो मैं खाना खा लूँ। खाना खाऊंगा तो नींद आने लगेगी। ओके सो 11:30 तक आके नहा धो के आई लाइक ड्राई माई सेल्फ। आई एम थिंकिंग 2 बजे तक आई कैन लाइक, कल संडे बट स्टिल। एक और चीज़, मुझे सुबह की आदत सुधारनी है अपनी, लाइक आई वांट टू गेट इनटू रूटीन ऑफ डूइंग ब्रेकफास्ट सुबह उठ के। सो आई थिंक 3 बजे तक इवन इफ आई स्लीप और मैं 10 बजे उठूँ, दैट्स स्टिल 7 hours ऑफ स्लीप, दैट्स स्टिल नॉट बैड। आई कैन स्टार्ट विद दैट। सो दो आई एम थिंकिंग कि लाइक 2 बजे तक मैं कोडिंग करूंगा, फिर 3 बजे 3 बजे तक मैं खाना खा के सो जाऊंगा। सो आई थिंक दैट्स अ गुड प्लान। सो अभी मैं जा रहा हूँ, आई सी यू आफ्टर आई कम बैक फ्रॉम शावर। हेलो, ओके, आई एम बैक, let's start solving some questions and my channel। मैं देख रहा था बस चैनल पे कितने व्यूज आए वीडियोस पे मेरे। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पहले, एंड आई ट्राई टू मेक इट मोर नेचुरल, कि मैं सॉल्व करते करते बीच बीच में मैं बोल रहा हूँ जो थॉट्स मुझे आते हैं,
जो प्रोफाउंड थॉट्स मुझे आते हैं, जो मैं कह रहा था कि मैं दैट रिप्रेजेंट मी, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लाइक कलेक्ट एवरीथिंग एंड शेयर इट ऑल एट वंस। आई वांट टू मेक इट फील नेचुरल। मैं चाहता हूँ कि मैं काम करते करते शेयर करूँ इसको। सो और मैं एक और चीज़ करना चाहता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। I'll do one of those therapy session things with Claude. I want to figure out why that happens, something that happens in my brain. मार्शन गार्डन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने देख रखा है, मैंने सॉल्व नहीं करा बस। ठीक है, काम करते दूसरा को सॉल्व। अरे नहीं, एक सेकंड, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे को ऐड कोडर करना था, भूल गया मैं लॉग इन कर लेता हूँ ऐड कोडर पे पहले। ओके, आई मीन माय नेम इज मृन्मय सान। इसका इसका आई नो इसका क्या मीनिंग है, लाइक आई फॉरगॉट इट, फॉरगॉटन इट। ये सामुराई की फोटो लगा रखी है मैंने। मृन्मय सान इज okay, so san and chan are two different things, and a guy told me about this जब मैं जापान गया था, तब मुझे बताया था हमारे एक नॉट मेंटोर बट जो भी हमें लाइक चीज़ें, जो भी हमें गाइड करा था। सो सन इज लाइक a way to address someone senior, and chan is like a very like formal, like informal way। ओके ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब बट उसने समझाया था, उसने समझाया था मुझे क्या होता है। खैर आज का कॉन्टेस्ट क्या था? रीसेंट कॉन्टेस्ट सैटरडे 7:30 8:15। फ्राइडे को भी कुछ था, आने वाला है संडे को। संडे एट क्वार्टर रीच। एक सेकंड, बिगिनर कॉन्टेस्ट रेगुलर कॉन्टेस्ट में फर्क क्या है? इज रेगुलर कॉन्टेस्ट लाइक टू एडवांस्ड? पुराने रेगुलर कॉन्टेस्ट देख लेता हूँ एक। बोलो। हाँ, एक सेकंड। ओके, वन सेक। हाँ ठीक है, सो हाँ हाँ, ओके। हाँ, मैं पुराना वो देख लेता हूँ। डेली कॉन्टेस्ट, इज दिस अ थिंग? स्टार्ट टाइम 8 मंडे। वीकली कॉन्टेस्ट, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। खैर, let's see. Code forces. Okay, this is 227, so safe to say कि इसके पिछले वाला contest would be 226. Can just edit the thing. Okay. At total regular contest, rating range 1200 से इतना, और मेरी कितनी थी? मेरी is my profile. Okay, okay. This is definitely way above my pay grade. एक सेकंड, why is it called a regular contest then? और इतना है, एक क्वेश्चन बनाने का ट्राई करता हूँ, चलो। ए tasks, meeting division, open link in a new tab। ठीक है, Takahashi and Aoki, Takahashi, Japanese, Takahashi and Aoki are going to assign exactly one of themselves। ठीक है, so I'll be normal, I'll be normal। It's fun to talk like that। There are n meetings numbered 1 to n। meeting I starts at time ऐसा and ends at time ऐसा है। एक बार ना, मेरे को बहुत मन कर रहा है मैं इस क्वेश्चन रीड आउट कर। Takahashi and Naoki are going to assign exactly one of themselves to each meeting as the person in charge। The same person cannot be in charge of two meetings that overlap for a positive length of time। More formally, the same person can be in charge of meetings I and J। ओके ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा, I'm just like I've got to focus। Takashi and Naoki are going to exactly one of the each meeting in the person in charge। The person who's going to be in charge of two meetings overlap for positive time of the person in charge meetings only
time of I is less than or मतलब time of start is less than उसका जब नहीं time of end okay एक का starting time should be greater than दूसरे का पहला time ठीक है find the model list to channel the people in charge that side by the condition ठीक है definitely not arts वाला का question ऐसा ठीक है find the way एक second find the number of ways to assign people in charge. Okay, good question. ठीक है so it's like this ये मेरे लैपटॉप में खैर फालतू चीज फॉरगेट इट मेरे लैपटॉप में एक कमी है वो जो मैं some other day मैं I'll explain what happens in my laptop कभी कभी खैर S let's take a constant and sometimes that like affects sometimes it's just better let's say n is equals to 5 so S1 start T1 S2 T2 let's just say like sort it S1 T1 S2 T2 जो भी S1 T1 and then S2 T2 जो भी whatever sort it पहला वाला किसी ना किसी को assign करना है and how many till like okay S1 T1 S2 T2 S3 T3 so it's like at जब S meeting S start हो रही है तो I'm just finding one of the ways to assign ओके तो लाइक ऐसा भी हो सकता है कुछ मीटिंग्स में कोई असाइन ही ना हो और कुछ कंस्ट्रेंट्स देखा है एस ऑल आर डिफरेंट ठीक है 2n से कम है मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ ये आज का क्वेश्चन नहीं था ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर मुझे भनक लग जाएगी कि कल किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं फिर आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सॉल्व आज जो क्वेश्चंस आए थे एंड हाँ ठीक है आई होप आई थोड़ी आई I was scared कि like थूक थोड़ी सी मेरे मुंह से निकल के माइक पे लग गई and that might ruin the mic but I hope that's not the case and I hope mic ऐसे ऐसे like जिस तरह भी wobble कर रहा है I hope it's still picking it up the नाक वाले area is like very it's uncomfortable wearing चश्मा sometimes खैर छोड़ो फालतू बातें नहीं output number model as assigned people in charge how the function let's start with sample test case 1 3 2 4 5 3 5 6 1 3 1 3 space optimization 1 3 2 4 5 6 so 1 2 3 4 5 6 we have 1 3 2 4 and 5 6 ठीक है so isn't it like always going to be no not always ठीक है so it's like um ए भी करके करता हूँ सो ए बी ना इसमें ए या बी है तो यहाँ पे दो देन वी हैव लाइक बी जस्ट बी देन लाइक ओके बी या ए को दोनों से सो लाइक टू टू दैट्स लाइक फोर तो ठीक है दिस मेक्स सेंस बट अगर अगर इस तरह का कोई कुछ केस हुआ व्हेन इट्स लाइक ओके 0 1 4 2 5 हाउ कैन इट बी 0 इंटरेस्टिंग सो आप क्या करना चाह रहे हो लाइक द केस वेयर there is a meeting जहाँ पे कोई assign हो सकता है we in that case that's not a valid case is that what you're saying so because that would have been a good question 1 4 2 5 3 6 so what you're saying is like
So you're saying like 1, 4, and then you have like 2, 5, and you have like 3, 6. So 3, 6 वाला कोई नहीं कर पाएगा, but is that part of the question कि um जहाँ पे like हर meeting has to be assigned? Or want to actually one of the cells to each of the meeting in the presence? Okay, each of the meeting. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. If that's the case, then let's say कोई सा भी permutation है, you can just swap them to create a different. Okay, maybe not that. Maybe it's not that simple. ठीक है. I'm thinking for any exact sequence, there exists a mirror for that. जहाँ पे Takahashi becomes Aoki and Aoki becomes Takahashi. So I'm thinking like the answer has to be like a multiple of 2. But it's like, okay, so listen, I'm just gonna first वाला किसी को assign करना पड़ेगा. Let's say A. Second वाला, if पिछले वाला is free. Wow, खांसी और हिचकी दोनों साथ में. Hichki क्यों? Have I not been drinking enough water? Hold on, give me a sec. I I just drank some water. I might have to end the video because हिचकी आ गई है. That's a problem. That's a problem. ठीक है. So I'm thinking, okay, let's just make observations. पहला वाला जो भी slot होगा. If at any point कोई ऐसा slot आता है जहाँ पे कोई भी fill नहीं हो सकता, then just I'm sorry, man. I'm sorry. Zero answer. ठीक है. So first वाला slot और जब भी दोनों free है, then the answer is like 2. दोनों में से कोई भी जा सकता है. But at that point, फिर number of people available becomes -1. So next वाला becomes like multiplied by 1. But then that can also be like 2. So okay, hold on. Obviously, I'm going to sort all of them. पहली बात. फिर first वाला बंदा. Excuse me, I can feel कि this is a good level का question. Second or third might be tough. I'm still gonna try it. I'm not gonna try that. It's better to save my energy for now. Tickets. It's late. So पहले अगर possible like जो भी मेरे पास है possible like 2 answers है उसके. A दूँ या B दूँ, ठीक है. So like any one of them but 2. फिर then अगले वाले पे जाता हूँ ना. like जो भी दे रखा है अगला वाला डिपेंड्स ऑन अगर एक ही पास प्लेसमेंट कर रहे हो बट अगर फ्री हो जाता है तब तक दोनों अगर फ्री हो जाते हैं then again multiply by 2. So हर slot में I'm going to multiply that. So like जितने possible है. Got it. I feel like I've got it. Let me try that. Let me try that. Yeah, नहीं. CPP, CD, competitive programming, I mean CPP. D65 and N saying and my nails big. My nails grew. Nails should not grow this much. VPII and plus 1. I might have to turn off the AC. Let me turn off the AC. I'm so sorry. You have to bear through this. And I is 1, I is 2, and I plus. The real question is video का edit. Okay, खाते edit कर सकता हूँ मैं. Or can I? B of I dot FL and then B of I dot SS.
इसके बाद क्या? So after this sort we dot begin plus one since one indexing we dot end. There you go. End answer is equal to one. हाँ ठीक है, this is the exact number. हाँ gotcha. No, नहीं यार, why would I such an insignificant bookmark? I'm not going to revisit this question. Come on. Okay, avail int AVL available is going to be AVL can also stands for I don't know what AVL like. मैं भूल गया, but like red black tree में it could stand for something. So खैर, oh multiply by zero कर सकता हूँ मैं, and then okay got it. ठीक है, but if AVL becomes zero then just no. जो भी जो भी. Hold on, T is not greater than. मैं लूप चला दूं क्या 2n तक, 1 से लेके 2n तक, because then I could actually like then I could like make store, but like अगले वाले पे I can see like अगर वो पिछले वाले पे कोई तो साइन हुआ होगा, पिछले वाला है उसके पिछले वाला है, नो 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 नो, जो भी असाइन, हाउ वुड आई नो कि दिस, हाउ डिड आई स्टोर द टी, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सो आई कैन स्टोर लाइक this is, if this is like more than the t's then good question. I'm thinking of giving up. I'm gonna go back to problem like these types of problems some other day. Rain go away, come again another day. और ये भी नहीं मैं करूँगा, मैं ये वाली करूँगा because I don't know something new. Okay, I don't mind this. You know what? Actually, मुझे क्वेश्चन करने का भी मन नहीं कर रहा right now. Not because it's क्या, just I don't know, just मन नहीं कर रहा. मुझे भूख भी नहीं लग रही, which is not explainable because मैं खाया नहीं हूँ ज़्यादा आज. And this is just going to be annoying for you. कितने मिनट का हो गया? So this is 18 मिनट, पिछला I'm guessing 20 मिनट, that's like 40 minutes. एक क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ दिखा देता हूँ अपने आप को, you know. Let's do this one. Let's do this one. ठीक है. During his long adventure, Steve stumbled upon a village of villagers. Wow. Houses in the village are connected by bi-directional paths. ठीक है. In total, there are n houses in the village. Number from the graph of houses and paths represents a rooted tree. I just showed I'm such a coward by not solving that question. By not, at least not even like trying to solve that question. It's because I have limited time and I just want to make sure the time comes. But like, nah, I'm a coward. I'm a coward for not solving it. That's it. So there's no justification for that. If I give a justification, that's not me. Like, I agree. I admit I'm a coward. Like according to my thinking, I should have solved that question, but I didn't. Okay. So then why aren't you solving that question? Why are you doing this? I don't know. In total, there are n houses in the village. Number from 1 to n. Graph of houses and paths representing the rooted tree. Consider an arbitrary house V and its subtree for each house V and its non-negativity to H. Consider a set of houses that are in a subtree of U at a distance of exactly H. Such set will be called a guild. ठीक है. The guild will consist of vertex V. In example, the guild for vertex 4 and H should be marked red.
H1 is light blue and okay, I don't know if you can see this, but this blue and green look exactly same to me because I have the night filter on. Let me turn it off. Okay, now it's different. But yeah, I'll go for your. Oh, is this how blind people see? Is this how colorblind people see things? Do they have a night like do they have like a permanent night filter on or something? So white looks yellow to them. Oh, probably could be. Like maybe certain type of night blindness is maybe a certain type of night blindness is like this kind. मैं बातें करके टाइम बहुत वेस्ट कर रहा हूँ ना. And in the example below, the guilds for the vertex V are shown. The guild for H is marked in red. Two guilds are considered completely different if there is a hazard is in one guild and not in the other. ठीक है. Steve wants to know how many different non-empty guilds there are and actually help him with this. Can I brute force? No, I cannot brute force. How many non-empty guilds are there? ठीक है. The parent of the ठीक है इस तरह से. Anyways, एक ट्री देने को बना दिया मुझे. Another thing is हर एक ट्री कितने सारे गिल्ड्स में हो सकता है. सॉरी हर एक um, या हर एक उसके कितने सारे गिल्ड्स में हो सकते हैं. सो if I know that like how many like the depth of the tree and how many um क्या बोलते हैं उसको. How many um nodes are how many nodes are at each depth. So let's say कोई एक particular node पे हो. I know कि उसके नीचे कितने सारे depth है. How many depth does it goes. Let's say it's like at level 1 5 level तक जा सकते हैं. So total depth is like x. It's a level y and like x like y, x minus y plus 1 number of guilds बन सकते हैं for that particular that node. Now the thing is उसका कोई subchild होगा. This is interesting. This is interesting. अब जो है at this point I should start drawing जो मैं सोच रहा हूँ. So ये parent है and इसका let's say दो children है या फिर इस एक parent इसका एक children है and you know something. Now here's the thing. इसके like इस level पे there's a guild और फिर इसके like at level like distance 1 and vertex I don't know V A V and A two cases right. So case 1 and case 2. So इस case में इसका अगर like A comma like V comma 1 का जो guild बन रहा है और A comma 0 का जो guild बन रहा है they're unique because इसमें सिर्फ A आ रहा है. However इस case में V comma 0 V comma 1 का जो guild बन रहा है and A comma 0 का जो guild बन रहा है those are not the same. Sorry, those are the same. In this case it's unique. So that's the only difference, right? So like हर नहीं बट इफ लाइक इसके नीचे यहाँ पे दो हैं बट इसके यहाँ पे कुछ नहीं है तो इस डिस्टेंस पे यही आएंगे और इसके भी इस डिस्टेंस पे यही आएंगे. Okay, got it. How many nodes? Okay, at any like given distance from the root. So this will overlap, correct? Right? So I want to find another way of counting. I could find a way of counting by saying कि okay हर एक house कितने सारे guilds में आ रहा है but then each house can like come in multiple guilds. I think I should stop talking and just think. Less energy. Am I getting sleepy?
Like, how is it? Every guild is going to be at a certain depth. Okay, that's so every guild has certain depth. I can depth from the node. I can quantify. I can like, separate, uniquely identify them by that. So let's say at level 0, only one guild is there, which is a root. At level 2, how many guilds are possible? There could be a combination, or there could be each of them separately. Like, what's the lowest common as no. When do I not count something? Or how can I group them? I can group them based on their parents, right? So एक node के कितने parents हैं? Okay, good question. Good question. हाँ, इसमें क्या होगा? Let me think. Let me think. I have thought about it a lot, or I cannot seem to go in any direction. I believe it's time to look for a hint or the whole solution. ठीक है, there's no hint, there's सीधा the solution. What could the solution possibly be? I don't know, let's see. DP, I thought of a DP, but I could not find any relation. I know depth से लेके कुछ होगा, ठीक है? Okay. Consider the guild at a distance h from the vertex V. The vertex V for such a guild will be called a central. Excuse me. ठीक है? For each vertex V, we will compute a DPV, the maximum depth from the root to some vertex in the subtree of V. ठीक है? The depth of the vertex itself is denoted as depth of V. If the vertex V is a leaf, the depth is equals to this. Okay. Otherwise, DPV is equals to max of DP2, or where child V is the set of immediate children of vertex V, max of जितने भी चिल्ड्रन है उसमें से जो मैक्स ऑफ DP2 है, ठीक है? Okay, fine. Let the answer to the problem for the subtree sort of vertex V be answered this. Consider vertex V and its children. I think I'll think about it थोड़ा सा, because यहाँ तक मैं समझ गया. थोड़ा सा I'll think about it by myself. Hold on. नहीं, मैं solution देख रहा हूँ. For child 2, the quantity L2 is equals to DP2. For child 2, depth minus key max depth, ठीक है? Indicates distance from V to the deepest leaf in the subtree. We will count the number of guilds that do not lie entirely within one subtree of any of our children. Whatever whatever that means.
All guilds for which the central vertex is a vertex फालतू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो ढंग से लिख सकते थे इसको. I don't feel good. My stomach doesn't feel good. Indicates the distance, quantity. We will count the number of guilds that do not lie entirely within one subtree of any of our children. Number of guilds that do not, okay, any of our children के जो subtrees बन रहे हैं, completely उसके अंदर नहीं लाए जाते, ठीक है? Thus, we need only consider guilds for which the central vertex is V. Central vertex क्या था? Consider guild at distance h from the vertex V. The guild V for such the vertex V for such a guild will be called a central vertex. What's a central vertex? The guilds for which the central vertex is V. ठीक है? ठीक है? A guild contains, I believe central vertex से वो बोलना चाहिए like the first vertex that's common. नहीं, hold on. ठीक है? A guild contains at least one vertex from the subtree of child 2. नहीं 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 I'm going to understand this on my own time और ChatGPT से पूछ पूछ के मैं समझूंगा इसको, ठीक है? Goodbye.